सो प्रीवियस टॉपिक में हमने आपको सिखाया कि आप कैसे अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि वर्डप्रेस इज अ सीएमएस, वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दे आर सिंपल स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ दिस बिग सिस्टम दैट यू नो एज वर्डप्रेस। इसमें यूजर्स हैं, इसमें थीम्स हैं, इसमें प्लगइन्स हैं, इसमें सेटिंग्स हैं, इसमें डैशबोर्ड है, इसमें कंटेंट है, इसमें पोस्ट्स हैं, इसमें पेजेस हैं, इसमें मीडिया है। दिस माय फ्रेंड्स इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बट easy to use system, and this is what makes WordPress super great. तो आपने यही करना है कि जब भी आपको कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स नजर आए, आपने मेंटली उस रिक्वायरमेंट्स को थ्योरी समझते हुए देखना है कि कौन कौन सी वो सेटिंग्स, प्लगइन्स, थीम्स, पोस्ट, पेजेस, कंटेंट, मीडिया है जिसको यूज करते हुए आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को वेदर फॉर योरसेल्फ और फॉर योर क्लाइंट प्रैक्टिकल शक्ल देंगे। And this is exactly how you're going to create a WordPress website which is not just an idea but an actual real practical example. So मैं करना ये चाह रहा हूँ कि I want to give you an idea about this by taking you online to one of the popular WordPress की freelancing websites which is known as Upwork.com. Upwork.com पे there is a lot of work available for WordPress freelancers. So we'll go online and we'll look at some of the work that is available there, और उस काम को हम translate करेंगे into real requirements and देखेंगे कि कैसे एक WordPress expert communicate करता है अपनी information को into real practical features. At the end of the day, WordPress is a very big system. With 30% of the entire internet is powered by WordPress, which means there are millions and millions, in fact there are hundreds and millions of websites out there जो कि WordPress से पावर हो रही हैं। तो कैसे आप इस तरह की एक साइट की रिक्वायरमेंट को थ्योरी से प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे? लेट्स गो लाइव एंड लेट्स टेक अ लुक एट इट। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे एंड वी विल सर्च फॉर वर्डप्रेस अपवर्क, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि किस किस तरह की जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल ऑन अपवर्क। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी नज़र आएंगी। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे अपवर्क का अपना एक पेज है विच सेज कि हायर द बेस्ट वर्डप्रेस डेवलपर्स, एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान कि जब आप इस पे जाते हैं तो आपको टॉप पे ये सारे वर्डप्रेस डेवलपर्स के नाम अपने सामने नज़र आते हैं। And the good news is that some of them you probably already have met or you will be seeing as WordPress के superheroes in Digiskills.pk. So Kashif की profile देखते हैं. Let's see how Kashif has tried to add information on his profile. So Kashif ने लिखा हुआ है कि he does WordPress, BuddyPress, WooCommerce, S2 member expert, and he has a 100% job success rate, and he has earned more than $80,000 on WordPress with more than 1,000 hours worked. So ये information है, but what we are interested in is कि WordPress की practical किस तरह फॉर्म में हम चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। सो जिस तरह यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि सिंपल वर्डप्रेस डिज़ाइन टेम्पलेट नीडेड, लेट्स ट्राई टू लुक इनटू इट एंड सी कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। Very simple WordPress design needed for Cannabis information website. Just need one homepage layout and one simple layout template to be used for other content pages. So अगर बड़ा simple सा उनको एक content page चाहिए, वो एक information है, इसके लिए आप again mentally you will see how you will convert that into a real practical form. आप उसके लिए कोई landing page का plugin use कर सकते हैं। इसी तरह let's look for another requirement. Looking for a WordPress developer
to WordPress maintenance works. So इसमें उन्होंने दी हुई है कि install uninstall plugins, make our web faster, optimize mobile, our website, develop some elements we need in marketing, query, quotation, contact forms. Sometimes we need support in layout, उसके लिए help us finding problems through tools like Search Console. So that's how you can mentally see कि इनको क्या क्या practically एक expertise चाहिए, and you have to see do you possess those expertise. If you don't, then the right way to do it is to go out and learn. Plugins को explore करें, देखें कि इसके लिए install uninstall plugin की एक option उन्होंने पूछी हुई which is very basic, but how can you make web pages faster? So you need to know about WordPress speed optimization. You need to know about how will you optimize your website for mobile, how you will install other plugins. That's how you will convert a client की theoretical information को जो यहाँ पे listed है to practical, and that's the most important skill that is required by you as a WordPress expert. इसी तरह let's look at this project which is fix WordPress post, Lightbox plugin and Google Maps plugin. So इनको कोई conflict आ रहा होगा, इन्होंने issue को mention किया हुआ है कि when I click on the image it should open as a Lightbox, but currently it opens in the current browser tab. The desired behavior can be found here. I assume the reason may be कि कोई JS minify या caching problem है. So it's up to you to find out कि ये JS minify क्या है, ये caching क्या है, और दोनों का जिक्र हमने पहले किया हुआ है अपने इस WordPress कोर्स में. So you as an expert need to know कि theory और questions को कैसे practical में convert करना है, and you can always do this by testing it out first on a test website that you have, and then reaching out to your client and bidding for it and deciding कि whether it is something that you want to do or not. इन्होंने एक और issue भी post किया हुआ है कि Google Maps का एक error आ रहा है and I guess I need some sort of API. तो वो API क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. और कुछ WordPress की websites को explore करते हैं. So इन्होंने एक कहा है कि image resizing for online magazine time sensitive. So कैसे आप WordPress में images को resize कर सकते हैं, कैसे आप बड़े images को छोटे images में smush कर सकते हैं, कैसे आप उसके लिए सही plugin ढूंढ सकते हैं. This is again a requirement that you must know about. This is again a thing that needs to be converted from theory to practical. So having that ability to understand that what the client is saying and what solution can you offer to that client is going to be super critical. It's going to be super critical because you want to make money. It's going to be super critical because you want to become a WordPress expert. कोई भी एक WordPress expert नहीं बन सकता जब तक उसको ना पता हो कि कैसे उसने theory को convert करना है practical में. So for you too, my advice is कि जाके देखें, plugins को understand करें, खुद अपने लिए scenarios create करें, अपने दोस्तों को कहें कि आपको challenges दें. In fact, you should create your own WordPress challenges, and based on those challenges, you should learn how to create magic with WordPress, how to become the best WordPress expert that the world has ever seen. Because ये जो एक economy है, ये जो एक global economy है, जो digital economy है, इसमें WordPress उसकी demand ज़्यादा से ज़्यादा होगी, and we want you to offer the right services to your clients to convert their theoretical challenges into actual practical products. So you can make money, so you can make your clients happy, and so you can become a part of this ever rising fourth industrial wave. So good luck in your journey, and try to learn from each other, try to give each other challenges, try to see how you can convert your theory to practical ideas, so you can not just learn, you can grow, and you can work with each other to really grow yourself in this global economy.